Today we will discuss about the physiotherapy in cancer. First of all, what is cancer? Cancer is a large group of diseases characterized by the uncontrolled growth and spread of abnormal cells. It means कि जब भी हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर सेल्स की abnormal growth होती है, uncontrolled growth होती है, then it is called as cancer. अगर एक पर्टिकुलर सेल का एक सेल साइकिल है कि इसमें 24 आवर्स में एक से डबल होना है, बट वही 24 आवर्स में एक से डबल की जगह एक से क्वाड्रपल या फिर 10 टाइम्स ज्यादा डिवाइड हो रहा है, यानी कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल्स की. What is neoplasm? It is the new growth of tissue that serve no physiological function. Neo means new. Plasm means a kind of plasma, membrane, a kind of a tissue. So neoplasm का मतलब हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से, कैंसर की वजह से एक ऐसा मास ऑफ टिश्यू बन गया है, टिश्यू मास ऐसा हो गया है जिसका फिजियोलॉजिकली कोई भी रेलेवेंस नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है. What is tumor? It is the clumping of neoplasmic cells. So when the neoplasmic cells, or I can say the extra uncontrolled grown cell of cancer, they form a big mass, and that big mass is called as a tumor. So when so many cells they are joining together, then they are forming a tumor. What is malignancy? Malignancy means cancerous. When anything is cancerous, when anything is uncontrolled growth, then we use the word malignancy. Benign means it is non-cancerous, at least it is not spreading from one part of the body to the another. Biopsy is a test in which we can perform the microscopic examination of the cell development. Metastasis, it is the property of the malignant tumors. They are not enclosed in a capsule. It means what कि इनके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह अपने एडजेसेंट सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं, उनको भी कैंसरस बना सकते हैं. जैसे हम सुनते हैं कि अगर एक एप्पल आपका सड़ा हुआ है, राइस है, बहुत खराब है और वो बाकी एप्पल्स को भी खराब कर देता है. दिस इज अ काइंड ऑफ मेटास्टेसिस. अगर आपका एक सेल खराब है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया कैंसर डेवलप कर रहा है, तो अपने आसपास वाले एरिया में भी कैंसर डेवलपमेंट करवाएगा. Mutant cells, that is disruption of RNA and DNA within the normal cells, may produce cells that differ in form, quality, and function from the normal cells. So there are so many different causes of cancer, in which there is one type, that is mutation. Mutations means when there is a sudden change in the base pair sequence of the genetic material, whether it is DNA or RNA, due to which the new cells, the new proteins which are producing in the body, they are of no use, we can say, or they are differ in the form or the quality. मतलब जो नॉर्मल सेल होने चाहिए ये वैसे नहीं है, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है. The pathophysiology, there are environmental factors, there are hormonal changes, maybe there is some inherited mutations or genetic mutations, or maybe there are point mutations, sudden mutations. They are causing the damage and failure of the repair DNA. So what will happen कि there are so many factors, बहुत सारे factors हैं, environmental है, hormonal है, genetical है, जो कि हमारे genetic material को damage करते हैं, जिसकी वजह से उसके बेस पेयर में चेंज आता है, तो उसको हम बोलते हैं कि म्यूटेशन हो गई, the genome there is mutation is occurring. Now because of this thing, what is happening that there is a activation of growth promoting oncogenes. अगर म्यूटेशन हो गई, नॉर्मली जो जीन्स हैं वो बनते हैं हमारे डीएनए में, we have genes which is also called as unit of inheritance. So what will happen is this mutation in the genome, in the genetic material, then the genes produced by those mutant DNA, they are called as oncogenes, are growth promoting. It means they are promoting the uncontrolled growth and it is causing the cancer. There is inactivation of tumor suppressor genes. Tumor को रोकने वाले जो genes हैं वो inactivate हो जाते हैं. And there is alteration in genes that regulate apoptosis, that is the normal cell death. So normally एक cell death का भी एक we have a formula कि हाँ cell की death होती है तो इस तरीके से होती है. तो mutation हुई,
पहले डीएनए के अंदर चेंज आया, उसके बाद हमारे पास म्यूटेशन हो गई, देन वी हैव थ्री फिनोमेना occurring at a single time. इट मे बी कि आपके ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स बढ़ गए, हो सकता है कि आपके ट्यूमर सप्रेस करने वाले जीन्स इनएक्टिवेट हो गए और जो नॉर्मल सेल डेथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, क्योंकि उसको उसके जो जीन्स है जो उसको एपोप्टोसिस को रेगुलेट करते हैं उनके अंदर भी ऑल्टरेशन हुई है। तो अब सेल या तो डेथ, सेल की डेथ ही नहीं हो रही, तो सेल इकट्ठे होते रहेंगे एंड दे विल बी अ बिग mass of tumor, or we can say there's a neoplasm developed. So what will happen because of these two phenomena? The unregulated cell proliferation, क्योंकि cell proliferation रोकने वाला भी नहीं है और cell proliferation बढ़ाने वाला भी है oncogene. तो इससे cell की proliferation, cell की growth बहुत ज्यादा हुई, apoptosis कम हो गया, यानी cell की death कम हो रही है। तो फाइनली हो क्या रहा है, colonial expansion, यानी कि सेल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनकी कॉलोनीज बनती जा रही हैं। धीरे धीरे ये सेल बढ़ बढ़ के एक ट्यूमर बना देंगे, दैट इज द ट्यूमर प्रोग्रेशन। एंड once the tumor from one place, it may metastasize to the another place also, to the adjacent tissues also, other body parts also, we can say. So that metastatic property is of the malignant tumor, that is the final tumor as a result of this whole pathophysiology. Now cancer is a group of diseases characterized by the uncontrolled growth and spread of a normal cell resulting from damage of the DNA by internal factors. It may be inherited, it may be mutations, there may be environmental exposure, there may be tobacco, smoke. These are the causes of the cancer. Most cancers are classified according to the cell type from which they originate. किस जगह से वो सेल, किस सेल के अंदर वो कैंसर है, कहाँ पर वो सेल, कौन से सेल्स में जो वो कैंसर है वो डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पर मोस्टली कैंसर को क्लासिफाई करा जाता है। द कार्सिनोमास दे डेवलप फ्रॉम द एपिथेलियल सेल। तो जो कार्सिनोमा होते हैं वो एपिथेलियल सेल से निकलते हैं। कार्सिनोमा दे डेवलप फ्रॉम द epithelial cells of the organ and they compose at least 80% of all the cancer. 80% जितने भी कैंसर होते हैं उसके पीछे जो मतलब मेजर हमारा जो कैंसर होने के जो चांसेस हैं, they are made because of the epithelial cells of the organs and they are called as the carcinoma. Other cancers arise from the cells of the blood like leukemia, the immune system, the cells of the immune system, and there is more proliferation, uncontrolled proliferation of the cells in the immune system, then it is called as lymphoma. And when there is a cancer development in the connective tissues, then it is called as the sarcoma. The lifetime prevalence of cancer is 1 in 2 of men and 1 in 3 for women. It is very, very common nowadays. Every one person out of 2 is having cancer in males, and in females 3 अगर फीमेल्स हम एक ग्रुप में कर देते हैं तो उसमें एक में कहीं ना कहीं कैंसर डेवलप हो रहा होता है। ट्रीटमेंट फॉर कैंसर में इन्वॉल्व सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, chemotherapy, hormone therapy, immunotherapy, we give interferon therapy. So in the process of destroying the cancer cells, some treatments also damage the healthy tissue. So patient may experience side effects that may limit their ability to exercise during treatment. If care, physiotherapy not only play a role in the physical. So physiotherapy in palliative care is oriented to achieve the optimum quality of life as perceived by the patient. So we can say that we are not actually treating the cancer. We are just in a palliative care team that the patient who is actually suffering from the cancer, उसकी quality of life में किस तरह से सही कर सकते हैं, especially by as we are talking about the physiotherapy here. तो फिजियोथेरेपी से उसकी फिजिकल हेल्थ को हम कैसे सही करके उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स फॉर अ पेशेंट. देयर इज अ हेड एंड नेक कैंसर, देयर आर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट आर आल्सो देयर, nutritionists, they also have to play their own major role, I can say. So the multi approach team, they have different sector, they have different duties, they have different responsibilities for the patients, and that